Good morning, students. Can you hear me? Okay. Okay, good. I have shared the link in Google Classroom as well as in the WhatsApp group. Join fast. Good morning. Walaikum Assalam. Okay, students, in the last class we have discussed law of diminishing marginal utility, we have discussed consumer surplus, and we also discussed indifference curve, and with the help of indifference curve we discussed consumer equilibrium, that is the tangency of indifference curve and the budget line, right, that we have done in the last class. And we have also seen that as you acquire more and more of things, the utility, the satisfaction derived from things goes down, right? So that we have already discussed. Now starting with a new topic which is synonymous with the study of economics. In fact, whenever someone asks you or someone tells you that he or she is studying economics, what comes to your mind? That is demand, right? Demand is synonymous with the word economics, right? Or you can call it, this is one of the important concept in economics, right? And this is very popular also and very important concept. At the same time, this concept must be understood properly for the sake of business, for the sake of market growth and sales growth. No company, no firm or industry can survive or can grow without understanding the dynamics of demand change of their product. Whatever product you are producing and selling in the market, unless you understand the demand pattern of your product, you will not be able to survive in the market, or you will not be able to capture larger share of the market, right? So let us understand what is the meaning of this term demand. Okay, so 55 of you have joined. I'm beginning with the concept. Okay, stop messaging and listen carefully. Okay, yes. So as you can see here, what is demand? Demand is amount of goods and services that consumers in a market are willing and able to purchase, right? I'll show you here some important component of demand, that the amount of good, that is the amount which consumers are willing. So term is willing, and the second term is able. Ability is also important, right? You may be having will, you may be having desire, you may be having want of something, but that is not enough
for demand. So demand is something which is backed by enough resources and the willingness, right? अगर आपके पास सिर्फ want है, आप चाह रहे हैं कि you want to buy an Apple, say iPhone, but if you don't have money, that cannot be treated as demand. So your need or your desire clubbed with the ability to pay, that is money must be there, then you can call it this is demand. So what is the first important thing for demand? That there must be a need, right? Or you must be willing to buy something, right? These two things are important, which you might have studied in the previous classes as well, maybe 11th 12th standard. But there is one aspect that is known as created demand. Nowadays you see there is lot of sales and advertisement activities in the market, lot of sales and the advertisement activities. What for these sales and marketing activities are there? The reason is to create new demand, and demand is created by influencing these variables, that willingness of the consumer, right? The advertisement try to change the willingness, the desire of the people. The advertisement influences the consumer's behavior, right? How consumers behave in the market, that is targeted with the help of advertisement. So it is affecting the willingness, and at the same time the ability to pay can also for the time being can be created, like by providing the credit facilities to the customers. Customer may not be having money, but customers is credit worthy, then the customer can get credit from the financial institution, and they acquire ability to pay, and then the desire is converted into demand, right? So this created demand nowadays play a very important role. Earlier the advertisement aspect was not that much effective, or people or the companies were not spending that much money on that. But nowadays you see on every media you will find advertisement, be it television, be it newspaper, or nowadays the digital marketing thing or social media is too much in vogue, right? So these three we discuss about need. There must be need or want. If these things are not there, it is created by the companies, right? So once willingness is available, the ability to pay, if customer is having money, if customer is not having money, then the credit facility create this ability to pay. And finally the timeline. Demand is irrelevant without time element. See, you say that if someone asks you what is your demand for, say, milk, so what you will say? You need to say as per a time. Say for per day you can say 2 liter per day, or you can say 60 liter per month. So there is a time element involved in case of demand. In the same way, companies also show their sales figures according to, say, weekly, monthly, or targets are set accordingly, right? Usually for a month. And finally, things are not available for free. Goods and services are sold at a price. So price element is there. So whenever we discuss demand, you must keep in mind these 5 things. Need, desire or created demand, number 1. Number 2 is willingness of the customer. Number 3 is ability to pay, right? And number 4 is the time element, because demand without time will become irrelevant, it will not be useful. And the last aspect, that is price, because things are available at a price, it is not free, right? So this is all about the concept of demand. I hope that you have understood this concept. Moving on to the next slide, I'm showing you here a simple
demand schedule or demand table. Okay, you can see here, this is one of the simplest formula which is used for calculating demand or estimating demand. Dx, that is demand for x, is equal to 100 minus 5x. Here minus sign shows that the price, this px is price of x. So price has indirect relation with the quantity demanded. That's why this symbol is minus, right? It is minus sign. Otherwise you will find plus sign if this variable is having positive impact on this. So you have also studied that on the right hand side we have independent variable and left hand side we are having dependent variable. So this dx is dependent variable, demand for x is dependent variable, whereas price of x is independent variable. So if price changes, if you put this price as 0, if you put it 0 here, so this whole term will become 0 and your demand will be equal to 100, right? Once you put the value, say 5 here, put the value as 5. So 5 5s are 25. So 100 minus 25, you will get demand as 75. Similarly, if price increases from 5 to 10, so put the value as 10 here, so this becomes 50 and your demand would be 50 here. Okay, and if the price increases further from 10 to 15, यहाँ 10 से 15 अगर हो जाता है तो यहाँ right here 15, so 15 5 से 75 हो जाएगा, so 100 minus 75, so your value will be, demand for this x commodity will be 25. And lastly you can see when price increases to 20, your demand becomes 0. Why it is so? You can see the equation here, right? 5 multiplied by 20, so 5 multiplied by 20 becomes 100, so 100 minus 100, your value will be 0, demand would be 0. This way, this is some simple equation, dear students, which can be used for calculating the demand values, and putting this in tabular form in rows and columns becomes demand schedule. So px, you can see this column is representing price of x commodity and the second column is representing demand for x commodity, right? So this tabular statement is nothing but demand schedule. Now I'll show you the same table can be converted into a curve, and that curve is known as demand curve. I'm showing you here, and if you have any question, dear students, you can put in the chat box, you can comment there, right? So on x, yeah, this is y, on y we are having price is shown on y-axis, okay, this is y, your price is shown here. So our price range starting from 0 to 20, so make it like this, 5, 10, 15 and 20, like this. And here you are having up to 100 quantities. So on x we are having quantity q, ठीक है, यहाँ पे x पे हमारी quantity रहेगी, this is x, and quantity is here, quantity, I am writing here quantity, okay, और quantity जो है it is starting from 0 to 100 to 0 है. So start with, say this is 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and finally this is 100. Okay, yes students, can you see this diagram is visible to you? Just let me know. Okay, it's visible, right? Okay, so you can see when price is 0, your demand is 100, here 100,
and when price becomes 5, your demand is 75. Okay, is here like that. Then when it is 15, it's 50 like this, and when it is 20, it is 25. So somewhere here. So if you connect these dots, these points, right, you will get this is your demand curve. So at different price you are having different quantity that can be shown with the help of this diagram. So, and this is known as demand curve, right? Okay, Alicia, what is not clear? Alicia, can you tell me what you are talking about? I am repeating here. देखो आप क्या है, if you are talking about this equation, I will show you this equation also. अब देखो I am repeating, dx क्या है, dx जो है डिमांड फॉर x कोई भी कमोडिटी मान लो, पेन, पेंसिल, एनीथिंग, और ये 100 जो है ये कांस्टेंट है, ठीक है. और यहाँ पे माइनस साइन क्यों है, माइनस साइन इसलिए है कि प्राइस और डिमांड जो है इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है, ठीक है, और यहाँ पे प्राइस है. तो इस तरह से वैल्यूज पुट करेंगे. अगर प्राइस ऑफ x एक करके मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखो dx इज इक्वल टू 100 माइनस 5. अभी अगर ये 0 ले लेते, मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 है ना, तो ये होल टर्म 0 हो जाएगा आपका, 100 माइनस 0. ओके, तो dx क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा आपका. तो यहाँ पे देखो 100 लिखा है. अगर 5 कर दिया आपने, सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 25, राइट. d is equal to 100 minus 5 multiplied by 5 is 25. So it is 75. So you can see this way it is 75. Same thing, same table can be converted into डायग्राम, कर्व्स में बदल सकते हैं. आप देखो 20 जब है तो उसका डिमांड कितना है हमारा, 20. देखो 20 पे कितना है, 0 है. यहाँ पे इसको कनेक्ट करो. ये थोड़ा डायग्राम जो है ऊपर हो गया है, मैं बता रहा हूँ आपको. I'll draw it again. You see कैसा कनेक्ट करना है. You need to just connect like this. ये 20 है, यहाँ पे 20 यहाँ होगा, और इस साइड में एंड में it will connect to 100. ओके, ये 100 से कनेक्ट होगा. थोड़ा डायग्राम इज not a straight, you need to make it straight. You see, it should touch to the end here up to 100, right. So at 20 your demand is 0, and at 0 price your demand is 100, you see here, right. And at 5, when price is 5, this 5, your demand is 75, so it is here, 1 point. And when price is 10, this is 10. When it is 10, what is the quantity, it is 50, right. So little bit, it is not symmetrical, it's not connecting, but that way you need to find different points and connect all these dots, and you will find the demand curve. Okay, now moving further. Now see, now general demand function, how demand function is defined. General demand function simply, general demand function, yes, that we will see. It will be downward sloping, obviously, that we will study in case of law of demand, right. And that there we will explain it in detail. That's why I have not explained here complete things. We will discuss there.
Now demand function. Demand function simply correlates quantity demanded with factors of demand. Okay. General demand function is the relation between quantity demanded and the factors that affect quantity demanded. Okay. क्वांटिटी डिमांड जो है किसी कमोडिटी की वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करते, उसका फंक्शनल रिलेशन इज नोन एज जनरल डिमांड फंक्शन. Okay, so here you can see, dear students, QD is the quantity demanded, right? और ये फंक्शन है इतने सारे डिमांड जो है किसी चीज़ की किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी. नंबर 1 इज प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी. नंबर 2 इज मनी इनकम, कस्टमर के पास इनकम कितनी है उस पर डिपेंड करेगी. देन प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, right? Price of related commodity also influence the demand of a particular commodity. Okay, the fourth one is taste and preference. Fifth one is expected price. Future में price क्या होने वाला, घटने वाला, बढ़ने वाला, we will study in detail when we will discuss determinants. Okay, and lastly it is the number of customers available, right? So when you convert these things into notational form, symbolic form में अगर आप लिखते हैं ऐसा, QD is the function of PM, PRT, PEN, तो ये हम इसको बोलते जनरल डिमांड फंक्शन, राइट. नोटेशनल फॉर्म में यूजुअली लिखा जाता है इसको, है ना. ये नोटेशंस है, सिंबल्स है, P for price, M for money income and so on. And the same, this general demand function can be converted into equation. थोड़ा इसके डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपके लेवल में एट फर्स्ट ईयर इट इज़ नॉट स्टडीड इन डिटेल, बट जस्ट आई एम शोइंग यू. ये फंक्शनल फॉर्म जो है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इक्वेशन में और इसको मेजरेबल बना सकते, इसको मेजर कर सकते हैं. तो आप देख सकते हो QD इज इक्वल टू ए जो है ऑटोनोमस डिमांड है ना, कांस्टेंट है, माइनस BP. B इज कोफिशिएंट ऑफ प्राइस और माइनस साइन मीन्स इनडायरेक्ट रिलेशन है क्वांटिटी डिमांड से, प्लस CM. C is the coefficient of money income and here sign is plus, which means income has positive impact on quantity demanded. The next one is this D is coefficient of price of related goods. In this case, you know, the sign will be either plus or minus both depending on the type of commodity. If commodity is substitute, it will be plus sign. If it is complementary, it will be negative sign. That we will discuss in case of determinants of demand in detail. Here you can say expectation of this E is your coefficient of taste and preference. Taste of preference favor में है तो ये positive होगा, अगर taste and preference favor में नहीं है तो negative होगा. And similarly the expected price and G is the coefficient of number of customer. The more number of customer, more will be the demand. This way, you know, this general demand function is converted into equations. Once again, Alfia, which point you are telling once again? डिमांड फंक्शन अगर बोल रहे हैं तो सी जनरल बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक कोई पॉइंट नहीं ले रहे हम. प्राइस भी है, मनी इनकम भी है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है एंड सो ऑन, तो इसके लिए इसको जनरल डिमांड फंक्शन बोलते. और सेम इस डिमांड फंक्शन को हम इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. अच्छा, इक्वेशन में करते क्यों है? क्योंकि उस क्वांटिटी को मेजर करें. अगर ये वैल्यूज़ आपको मिल जाती हैं तो आप इजीली क्वांटिटी डिमांड जो है मेजर कर सकते हैं. ठीक है, तो इसकी वजह से हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं इसको. अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज डायरेक्ट डिमांड फंक्शन. डायरेक्ट डिमांड फंक्शन, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल को डिस्कस किया गया है. डायरेक्ट डिमांड फंक्शन is the relation between price of the commodity and quantity demanded per period of time, keeping other variables as
constant. आप यहाँ देख सकते हो all other variables are kept constant. Then we try to see the relation between quantity demanded and price. Okay? अच्छा ठीक है अल्फिया, आई जस्ट रिपीटेड. जनरल में क्या है, सारे के सारे वेरिएबल्स आप मेंशन करते हो नोटेशनल फॉर्म में इन रिलेशन टू क्वांटिटी डिमांडेड. लेकिन डायरेक्ट डिमांड फंक्शन में क्या बताते हैं हम, वी ट्राई टू शो द फंक्शनल रिलेशन ऑफ प्राइस and quantity demanded. That is known as direct demand function, or in simple words it is written like this: the relation between price and quantity demanded per period of time keeping other variables constant is called direct demand function. You can see here, this is our direct demand function. Okay, then moving on to quantity, दिस इक्वेशन, ये देखो इक्वेशन में कन्वर्ट किया हमने. क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू 1300 माइनस 9p. इफ सपोज आई एम राइटिंग हियर QD, क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू 1300 माइनस 9. अगर प्राइस सपोज इट इज 10, प्राइस इज 10, you can easily calculate 1300 minus 10 multiplied by 9 is 90. So your quantity demanded will be equal to 1210. Similarly, if price changes to from 10 to suppose it becomes 20, say for example, so this whole figure will change, it will become 120. So 180. So 1300 minus 180, that will be our quantity demanded. So when you convert this, when you fit a equation, then easily you can make out the value, you can calculate the value. आपको ये P खाली पता चलना है कि किस प्राइस पे क्या क्वांटिटी डिमांड होगा. एक बार आपने इक्वेशन सेट कर लिया तो ये फ़ायदा है, ये एडवांटेज है आपका डायरेक्ट डिमांड फंक्शन को मेजर करने का. ठीक है, yes, okay, very good. Okay Priya, so now moving on to this is where we show the general demand and direct demand. There is another concept also called inverse demand function. ठीक है, वो आपके लेवल पे नहीं है, बट इनवर्स डिमांड फंक्शन में क्या होता है, क्विकली आई विल से कि डायरेक्ट डिमांड में हम देखते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड कैसे इफेक्ट होता है, चेंज होता है प्राइस के चेंज होने की वजह से. इनवर्स डिमांड में क्या करते हैं कि डिमांड के चेंज होने की वजह से प्राइस में चेंज क्या होता है उसको देखते हैं. डिमांड का वे शोइंग व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस डिमांड फॉल्स, बट देयर आर सम कमोडिटीज व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी, नो दैट इज एक्सेप्शन ऑफ डिमांड. वो एक्सेप्शन होता है क्योंकि देखो खाली आप प्राइस पे डिमांड को नहीं डिटरमिन कर सकते. हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, देखो क्या कह रहे हैं, रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड पर पीरियड ऑफ टाइम कीपिंग अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट. लेकिन ये अदर वेरिएबल अगर कांस्टेंट नहीं होते, सपोज प्राइस बढ़ गई लेकिन हमारी इनकम भी बढ़ गई है ना, तो डिमांड नहीं घटने वाला, बढ़ ही जाता है. पॉपुलेशन बढ़ गई तो डिमांड बढ़ जाएगा, है ना. तो आपको लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि इनडायरेक्ट रिलेशन है, मींस क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस, अदर वेरिएबल्स वो कांस्टेंट मान लेते. लेकिन रियल लाइफ में वो कांस्टेंट होता है क्या, आर दी अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट इन द रियल लाइफ? नो, दे आर नॉट कांस्टेंट, right? So when price changes, price increases, still demand increases if other variables are affecting the demand, maybe income, maybe taste and preference, maybe some things are in fashion, so people are demanding even if price is increasing, क्योंकि वो फैशन में लोग उसको बाई कर रहे हैं, right? So that way, you know. Okay, so this way you can easily understand this direct demand function and general demand function. And yes, as far as is concerned, you can easily, yes, notes it will be available in Google Classroom, and follow this
this lecture is getting recorded, that you can repeat and watch it. Notes also will be giving. Now moving on to demand types. There are different types of demand, students. Let us quickly see these different types of demand. So first one is market demand and individual demand. Right, individual demand means per person demand. हर एक individual के perspective पे हम demand देखते हैं कि हमारी demand क्या है product की, different product की. How much of clothes I buy, how much of food item I buy, how much of say milk I buy, right? Mobile phone, anything. So demand by an individual is known as individual demand, and market demand is demand by all the individuals in the market is treated as market demand, or you can call it summation of individual demand is market demand. Summation, addition, summation of individual demand is your market demand. Okay, कोई प्रोडक्ट ले लो, सपोज again I'll take say butter. So individual butter demand may be say 100 gram per week, but if it is for the whole market, it may be in tons, because all individual together for a market, for a place, say Pune, how much demand is there? So market demand that way, summation of individual demand. Or companies are not much concerned about individual, they are concerned about market demand. Product की demand उनकी overall क्या है उसके हिसाब से analysis की जाती है. Okay, now second point is very important, students. Let us see, that is derived demand and autonomous demand. पहले देखते हैं हम autonomous demand. Autonomous demand means डायरेक्ट डिमांड, और डिराइव डिमांड को इनडायरेक्ट डिमांड भी बोलते हैं, ऑटोनमस को डायरेक्ट डिमांड भी बोलते हैं. याद रखने का, डिराइव डिमांड इज नोन एज इनडायरेक्ट डिमांड ऑल्सो. ओके, डिराइव्ड डिमांड इज इनडायरेक्ट डिमांड and autonomous demand is known as direct. So here autonomous demand, dear student, is directly by the consumer. When final customer directly buy it for consumption, that is known as autonomous demand. Whereas derived demand is a demand which depends on demand of other commodities. Say for example rubber, tires are manufactured from rubber. If car demand or truck, buses demand increases, demand for rubber by rubber, the tire manufacturing company will go up. तो जो रबर का डिमांड है, that is a derived demand, indirect demand, depending on demand of tires by the vehicle manufacturing company. तो उस तरह से वो derived demand होता है. Mostly the capital goods और machinery equipment जो है वो that is derived demand, indirect demand होता है. ठीक है, is this clear students? Derived and autonomous demand is clear to you? Okay, now moving on to company demand and industry demand. Company demand and industry demand. Say for example chocolates. ठीक है, chocolates are manufactured by many companies, है ना, many companies. So if it is Cadbury, so company demand for Cadbury will be known as company demand. Whereas this chocolate industry overall complete, बाकी के और सारे कंपनीज हैं जो चॉकलेट्स बनाते हैं, सारे का समेशन जो होगा दैट विल बी इंडस्ट्री डिमांड. चॉकलेट डिमांड इन जनरल irrespective of company is known as industry demand. Okay, that is the difference between company demand and industry demand. Now short term demand and long term demand. Okay, short term demand is for the short period. Usually in economics short period is 1 year period, but
डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ कमोडिटी, किस तरह का प्रोडक्ट है, नेचर क्या है प्रोडक्ट का, उसके हिसाब से शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन होता है. सपोज वेजिटेबल्स, फॉर वेजिटेबल्स यू सी इवन 2 days टाइम, 3 days टाइम विल बी लॉन्ग पीरियड. 3 days में वो ख़राब होने वाला है ना. तो ऐसे प्रोडक्ट में शॉर्ट पीरियड जो है वो घट जाता है बहुत ज़्यादा. बट इन केस ऑफ ड्यूरेबल कमोडिटीज, शॉर्ट पीरियड में भी फॉर से कार्स, bikes, mobile phones, short period means 1 year period. For long period maybe 5 year, 2 year, right? So demand for longer, more than 1 year, usually more than 1 year period will be treated as long term demand, and less than 1 year period, month, for a month, 2 months, 6 months will be treated as short term demand. Next point is market demand and market segment demand. You know, segmentation is there. Suppose clothes, you take clothes industry is one industry, cloth market. अभी cloth market में भी adults के लिए अलग market है, उसका सब market क्या होगा, segment, market segment. आप clothes seller हो तो आप जो है adults के बेच रहे, ladies के लिए बेच रहे, kids segment के लिए बेच रहे, right? There are different segmentation of market, same product है ना, क्लोथिंग का ही आइटम है लेकिन अलग अलग सेगमेंट में काम करते हैं लोग. कोई ओनली किड्स क्लोथ्स रखते, कोई ओनली लेडीज़ क्लोथ्स रखते, कोई ओनली जेंट्स क्लोथ रखते, उसमें भी कोई जो है नाइट ड्रेसेस रखते, कोई पार्टी ड्रेसेस रखते. सो दिस इज नोन एज दिस वे मार्केट सेगमेंटेशन इज डन. व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू आर डीलिंग विथ, that segment you must focus to know, to understand the demand from the business perspective. Okay, next point is perishable and durable good. Perishable goods are those goods which cannot be stored for longer period, which become useless after some time. As I told you, vegetables, milk, you cannot use for long period, you cannot store it for longer period, right? Whereas there are so many goods which are durable, which can be kept for long period. So different type of commodity, different demand dynamics is there, different demand elasticities are there. Okay, so understanding different types of demand is very important. Then consumer goods and producer good. Consumer goods are those goods which are demanded by the direct consumers, right? All food items, clothing item, and so on. Whereas producers goods are those goods which are used by the producers either as a capital goods, machinery, equipment, or input or raw material. So that way that is producers good. जो producer खुद buy करते हैं then उसको process करके final product बनाते या consumer goods बनाते, right? So this is all about the types of demand, dear students. Okay, derived demand. Okay, derived demand, just know, see, derived demand is a demand which depends on demand for other commodity. जैसे मैंने बोला टायर्स होते हैं ना, टायर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो क्या यूज करते, रबर यूज करते. तो रबर डिमांड जो है ना वो डेराइव डिमांड है, वो टायर के डिमांड पे. टायर कौन डिमांड करते, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करते. तो व्हीकल की डिमांड अगर ज़्यादा होगी तो टायर की डिमांड ज़्यादा होगी, और जब टायर की डिमांड ज़्यादा होगी तो रबर जो है उसकी डिमांड ज़्यादा होगी. दिस वे टायर की डिमांड भी डेराइव डिमांड है, रबर की डिमांड भी डेराइव डिमांड है. असल में प्रोडक्ट क्या है, मेन प्रोडक्ट इज व्हीकल, राइट? बाइक, cars, trucks, buses. So this vehicle demand is direct demand, whereas tire demand is derived demand, which is occurring if more and more cars, bikes are sold, the demand for rubber will go up. So that is indirect demand. Okay, now quickly move on to the next segment, important part, that is demand, determinants of demand. Dear students, I want your attention. Determinants of demand, factors of demand. Determinants को आप factors भी बोल सकते हैं.
ओके, फैक्टर्स ऑफ डिमांड, कौन कौन से फैक्टर्स है हमने अभी आपको बताया जनरल डिमांड फंक्शंस में. तो फर्स्ट वन इज नोन एज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सेकेंड वन इज इनकम ऑफ द परचेजर और कंज्यूमर, थर्ड वन इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जिसको हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स के केस में लिखा है. देन पर्सन्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड हैबिट्स, देन कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन about future change in prices, and lastly this is effects of advertisement and sales. okay, और एक चीज यहां बताऊं मैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में हमने यहां पे इंडिविजुअल डिमांड की बात की है, राइट. डिटर्मिनेंट्स भी वैरी करते इंटेंसिटी में, उनकी इंटेंसिटी बदल जाती है, उनका टाइप बदल जाता है डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड. मार्केट डिमांड एंड इंडिविजुअल डिमांड के कुछ फैक्टर्स तो कॉमन है, ये फैक्टर्स कॉमन है 1 to 6, लेकिन सम अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर विच इन्फ्लुएंस द मार्केट डिमांड, विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. बट हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंडिविजुअल डिमांड, हाउ इंडिविजुअल डिमांड डिपेंड्स ऑन these factors. So first point is price of the commodity. This price of commodity, there is general relation. क्या है, अगर प्राइस की चीज की बढ़ेंगी तो डिमांड उसका घट जाएगा. यहाँ पे एक चीज याद रखने वाला है कि जब भी हम ये बोलते कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड घटेगा, हम ये अज्यूम करते, ये मान लेते कि बाकी चीज़ें, ये जो बाकी फैक्टर्स आप देख रहे हैं, अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट. देन वी ट्राई टू सी द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड quantity demanded. When price increases, quantity demanded decreases. When price decreases, quantity demand increases. So there is indirect and inverse relation between price of the commodity and quantity demanded. In detail we will study this when we will study law of demand. Moving on to the second point, that is dear student, that is the income of the customer or purchaser and the demand of a commodity. Here you see income affect or influence demand in a different way for different commodities. Income influences demand डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ कमोडिटी. किस टाइप की कमोडिटी है उस पे आपका डिमांड डिपेंड करेगा विद द इंक्रीज इन इनकम. अभी आपको बताऊं मैं, अगर कमोडिटी इंफीरियर है तो उसका डिमांड कर्व ऐसा होगा, इट विल बी लाइक दिस, बैकवर्ड बेंडिंग कर्व होगा. एज इनकम इंक्रीजेज your demand, here you have demand, quantity demanded on x, and on y axis you have your income. okay, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ते जा रहे हैं आपका डिमांड बढ़ता है इंफीरियर गुड का, लेकिन अप टू अ सर्टेन पॉइंट, इस पॉइंट तक बढ़ेगा. आफ्टर दैट इंफीरियर गुड्स की डिमांड घट जाती है. क्यों? जब आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप इंफीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बाय नहीं करने लगते, फिर सुपीरियर क्वालिटी ऑफ सेम प्रोडक्ट यू बाय. ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैव बैकवर्ड बेंडिंग कर्व, डिमांड कर्व इन केस ऑफ इंफीरियर गुड. दिस इज इंफीरियर का हो गया. एंड इफ द कमोडिटी इज नॉर्मल गुड, okay, if the commodity is normal good, it will be like this curve, normal goods. In case of normal goods, when income increases, demand increases continuously, it increases, it keeps on increasing like this, normal goods. And in case of necessities, when income increases little bit, there is increase in the necessary good, because there are a segment of people who are not having any income or whose income is very very less. तो जो नेसेसरी कमोडिटी है उसका ही कंजम्पशन वो कम करते हैं, बहुत कम करते हैं. तो जैसे जैसे इनकम बढ़ता है तो थोड़ा उसका इनकम बढ़ने की वजह से थोड़ा डिमांड बढ़ता है इन केस ऑफ नेसेसरी गुड, नेसेसिटीज.
तो in some books you will find the demand for necessities like vertical curve, irrespective of change in income it becomes like this, but more normal is that it will be increasing little bit and then it will be like this, it becomes vertical. यहाँ origin से आएगा और यहाँ पे vertical हो जाएगा आफ्टर सर्टेन लेवल ऑफ इनकम, क्योंकि इनकम बहुत ज़्यादा भी हो गए फिर भी आप सॉल्ट का कंजम्पशन ज़्यादा नहीं कर देंगे, विच इज़ अ नेसेसरी कमोडिटी. इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, वाटर कंजम्पशन है, राइट. दिस थिंग्स यू विल नॉट कंज्यूम इवन इफ योर इनकम इज मोर. सो थोड़ा बिगिनिंग में क्योंकि लोगों की कंजम्पशन उन चीज़ों की नेसेसिटीज़ की भी कम होती, तो जैसे इनकम बढ़ता है ये बढ़ेगा. एंड इन केस ऑफ लग्जरी व्हाट हैपेंस, your demand curve will be increasing like this, luxury goods. So on the basis of the response of the commodity with the increase in income, in fact the commodity is classified as inferior good, necessary good, normal goods and the luxury goods. Okay students, is this clear? Income का समझ में आया आपको? Income and the type of commodity, हर एक commodity का अलग अलग commodity का अलग अलग type of relation देखा जाएगा. inferior के केस में up to certain level increase होगा फिर घटने लगेगा. necessary के केस में थोड़ी देर के लिए increase होगा, बहुत थोड़ी देर के लिए, and after that it becomes vertical. normal goods में increase करता है, keep on increasing and then slightly it becomes less elastic. and in case of luxury goods, in fact luxury goods का zero से start नहीं होता, क्योंकि luxury goods is costly and after reaching certain level of income only you start consuming. तो luxury zero से नहीं होगा, actually it may be starting from somewhere here like this. You can not from zero, but after attaining certain level of income your luxury goods consumption will start. And now quickly moving on to the third point, that is the price of related goods. Price of related goods also influence your demand for a commodity. Say for example, if price of tea, यहाँ पे ले लेते हैं हम प्राइस ऑफ टी, यहाँ पे डिमांड फॉर कॉफ़ी ले लेते हैं हम. सो इन केस ऑफ दिस यू हैव इंक्रीजिंग कर्व लाइक दिस. जैसे प्राइस की टी बढ़े, प्राइस ऑफ टी इंक्रीज होता है, बढ़ जाएगा, तो डिमांड फॉर कॉफ़ी इंक्रीज हो जाएगा. ऐसा यू कैन सी, इफ प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेज डिमांड फॉर कॉफ़ी इंक्रीजेज. वाई सो? अगर प्राइस टी की प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे अभी 20 रुपीज़ है, वो 40 हो जाए, तो लोग सोचेंगे कि भाई इंस्टेड ऑफ टेकिंग टी लेट अस हैव कॉफ़ी, बिकॉज कॉफ़ी इज substitute of tea and treated as a superior commodity than the tea. So as price of tea increases, demand for coffee also increases. So in case of substitute goods, there is positive relation between price of substitute and demand for the other related commodity. But in case of complementary goods, what happens? See, the demand for, I'll show you here. यहाँ पे सपोज आपने समझ लो पेट्रोल प्राइस लिया, पेट्रोल प्राइस, and here demand for car and bike, okay. So you can see petrol price on y-axis, demand for car and bike. If petrol prices increases too much, what will happen? If price is here very high, demand for car bikes will be less. If petrol price decreases very low, say 50 rupees per liter, you will see people start using bikes and cars more, or the demand for it will go up, right? So in this case there is indirect, यहाँ पे ज़्यादा है तो डिमांड कम है, प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाता है. In case of complementary goods, there is
negative relation or inverse relation between price of related good, complementary good, and demand for the related goods. Okay, so complementary goods are those goods which are demanded simultaneously, एक साथ jointly demand होते हैं, इसलिए एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड घट जाती है. तो this is way price of related good influence the demand for a commodity. Then fourth one is person's टेस्ट एंड प्रेफरेंस. किसी चीज़ की टेस्ट एंड प्रेफरेंस डिमांड को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है. इनफैक्ट एडवर्टाइजर्स जो है, एडवर्टीजमेंट्स, यस ओके. सो कोई चीज़ अगर फैशन में है, बहुत ज़्यादा फैशन में आ गया है, तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है. इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्राइस ज़्यादा है फिर भी उसको डिमांड करते हैं. ठीक है. टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड हैबिट ऑफ पीपल ऑल्सो इन्फ्लुएंस द डिमांड. कोई चीज़ जैसे यू सी स्मोकिंग, टोबैको प्रोडक्ट, अल्कोहल, पीपल आर हैबिचुअल टू दीज थिंग्स. So irrespective of rise in price, irrespective of fall in income, people consume these products. Okay, so taste and preference play very important role. Taste and preference के वजह से, habit की वजह से लोगों की डिमांड जो है फिक्स रहती है. हैबिचुअल अगर हो गए, चाहे प्राइस बढ़े घटे, आपकी इनकम घट जाए, फिर भी आप बाकी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हो. उन चीज़ों को जो कि आप हैबिचुअल हैं उसकी कंजम्पशन आपकी ख़त्म नहीं होती, वो कंटिन्यू रहता है. ओके. नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंज इन प्राइस. अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, तो करंट डिमांड जो है, करंट डिमांड, राइट, अभी की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है आपकी, ये इंक्रीज हो जाएगा. ओके. करंट डिमांड इंक्रीजेज इफ आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में डिमांड जो है वो प्राइस जो है बढ़ने वाला है, तो आज के डेट में आप परचेज करना चाहोगे. अगर आपने ये अज्यूम किया, आपका एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस घटने वाला है, मे बी सम डिस्काउंट इज कमिंग और सम फेस्टिवल इज कमिंग, फेस्टिवल बोनस होने वाला है जैसा अभी दिवाली के टाइम में था, तो व्हाट हैपेंस, पीपल रेस्ट्रेन बाइंग नाउ. अभी करंट डिमांड जो है वो घट जाएगा और फ्यूचर में जब प्राइस एक्चुअल में घटता है तो फिर डिमांड बढ़ जाएगा. सो दिस वे कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन ऑल्सो इन्फ्लुएंस the demand of a product. Okay, and lastly advertisement is there, dear students. This is last point, then I'll stop, and in the next class we will discuss about market demand, किन factors पे, determinants पे depend करता है, that we will discuss. and simple way में आप देख लो कि advertisement and sales प्रमोशन से क्या है, डिमांड बढ़ता है. इसीलिए कंपनीज जो है एडवर्टीजमेंट पे इतना पैसा लगाती है, टेलीविज़न पे और न्यूज़पेपर में, ऑनलाइन है, डिजिटल मीडिया है. जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, है ना, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस जितना ज़्यादा होगा, डिमांड उतना ज़्यादा बढ़ने के चांसेस रहते हैं. हालांकि और सारे फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं डिमांड के बढ़ने में, बट इन जनरल देयर इज़ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एडवर्टीजमेंट expenses and demand of a product. So this is all about the determinants of demand, dear students. If you have any question, still any doubt, you just post in the chat box, है ना. after this live session chat box में comment करो, आप comment में question भेजो आप, I will reply, or you can ask in the other class also when I'll take. Okay, so thank you so much students, thanks for watching. Have a nice day. Thank you so much students. Bye bye.